this session. Okay, so I'll give you a topic and I have sent you some of the videos also to see. And on the basis of that videos, बहुत से topic बन सकते हैं. That is related to sports in India. अब बहुत से topics बन सकते हैं group discussion में related to sports. Where India stands in sports. Is cricket the only game? Is cricket killing other sports? Our national game is hockey, but is cricket killing the sports? Can we think of making career in sports? Where India stands in sports? How we can promote sports in India? How can India shine in Olympics, next Olympics? हमने अपने अभी तक अपना बेस्ट जो दिया है वो टोक्यो ओलंपिक्स में दिया है अभी तक का बेस्ट. So can we think of something good? So sports में India, that is something which actually is the topic we are going to discuss today. And उसी के ऊपर हमारा रहेगा. तो पहले मैं एक टॉपिक दूंगा आपको, आपने उस टॉपिक के इन एंड अराउंड रहना है. So it is very important that the topic which I give you, you should understand the meaning of that. The way topic is given, it carries different meaning. How India can improve its performance in Olympics, वो अलग topic है. The status of India in global sports, वो अलग topic है. So you need to see the topic and speak around that topic. You should not basically deviate from the topic. That is something which is very, very important. And you should write that in copy ke okay sports ke upar we can have a topic in GD. And then you gather some inputs, you gather some points also. And you people, whenever you keep on watching YouTube or TV or newspaper you read, always make it a point that once you have done some topic in GD, then in your copy you should jot down important points related to that. Suppose tomorrow you came across something related to sports, then you write that particular thing somewhere where you have discussed about sports. That is how you will increase your level of knowledge. So students think that first knowledge will come and then we will talk in GD. Actually it is reverse. First you will talk in GD and then you will see what knowledge I need to acquire. आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं लिख रहे हो, आप लोग ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हो, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ और टाइप का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है. और वो नॉलेज आपको जब जीडी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आ सकता है. और उसके बाद जब आपको पता लग गया ये टॉपिक आ सकता है और वो नॉलेज आपको कहीं से मिलेगी तो उसको जोट डाउन कर लेना है आपने. दैट इज हाउ यू विल बेसिकली गो फॉर इट. एंड आपका दिमाग उस डायरेक्शन से ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में आपने उस चीज को करना है. आई गिव यू एग्जांपल. आपको पता होगा ये स्पोक्स पर्सन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. यू नो दैट देयर आर स्पोक्स पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर किसी को स्पोक्स पर्सन नहीं बनाता. उसी को बनाता है जिसकी इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है कि उसने क्या बोलना है और कितना बोलना है और कैसे बोलना है. दैट्स इट. उसको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होता. ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है. एनी ऑर्गेनाइजेशन द पर्सन हु इज द मोस्ट नॉलेजेबल इज नॉट मेड द स्पोक्स पर्सन. That person is made spokesperson who knows how to speak about the topic, where to speak what. यही आपको acquire करना है GD के अंदर. You should become spokesperson actually. Like okay, this is the topic given. Now he said this, I need to say this. He said this, I need to say this. He told this, I took a clue and I started speaking about that. This is what you need to do. So it is more than knowledge actually. It is not related to knowledge. In-depth knowledge is not required, but yes, you should know how to talk and how to manipulate it. So today what we will do is I'll give you a topic, 1 or 2 minutes to think, and then everybody will introduce one by one, and then house will be open for the discussion and then conclusion. That is how we will go for it. So let me give you the topic for discussion today, that is sports in India. That's it. Sports in India. Very, very generic. Sports in India. Now you think how you think you should start, and since everybody is starting, don't refer anybody else. Don't say he has said this, because you are to presume that you are starting. So sports in India.
Okay, so I start with the Shubham today. Shubham, Yes, please go ahead and introduce the topic. yes, sir. Good morning, friends. My name is Shubham Savale. I'm glad to the discussion is sports in India. In my opinion, this topic is of relevance and also thought-provoking. As the name sports come into our mind, the first thing which come into our mind is cricket, but not the other games because we have many role models in cricket. But in other games, we didn't find that many numbers. Basically, I want to divide this topic into two main categories. Like, what are the reasons why we are not able to produce players like which when we go for Olympic and these things. Why not we are like China and America, this type of countries. And also, second point is what are the measures we can take to improve these games and the sports in India, like on the basis of three, like what we do for the players can do, what the community can do, and what the government can do. Like their role is main important. The government, like they develop this schemes, Hello India, this type of. Now I invite all of you to take participate in the discussion. Okay, Shreyansh. Yes, sir. So, good morning, hello friends. My name is Shayan Sharma, and I'm feeling very good to introduce the group discussion. So, the topic for the it's very important topic, relevant topic है, and सब पे discussion करने लायक topic है. According to Rajvardhan Singh Rathore, sports ministry is the happiness ministry of this nation क्योंकि sports हर किसी में happiness लाता है. जब हम sports कहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रिकेट या फुटबॉल हम ऐसी चीजों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम यहाँ पर स्पोर्ट्स पे डिस्कस करें तो हम एथलेटिक्स को भी इंक्लूड करें, जो कि मोस्टली हम नेग्लेक्ट करते हैं. तो पोलराइज ना करते हुए टॉपिक को केवल क्रिकेट, हॉकी एंड उन सब पर, हम यहाँ पर एथलेटिक्स और उन सबको भी इंक्लूड करें. साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स इन इंडिया में जो स्पोर्ट्स अभी मौजूद हैं और जो स्पोर्ट्स अभी बन रहे हैं, जो डेवलपिंग स्टेज पर हैं, जिनको अभी ज्यादातर स्पोर्ट्समैन उनमें नहीं आए हैं, उनको भी कैसे फ्लरिश कर सकते हैं उन पर डिस्कस होना चाहिए. हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडल्स इन द इंटरनेशनल गेम्स, हम उन पे फोकस करें. और साथ ही साथ स्पोर्ट्स इन इंडिया, द मेन बैकबोन आर स्पोर्ट्समैन, तो किस तरीके से उनका टैलेंट हंट किया जाए, स्पोर्ट्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं और क्या अभी तक स्पोर्ट्स जहाँ पे लैक कर रहा है उस पे डिस्कशन मेन होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी दीज वर सम पॉइंट्स. सो आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन फ्रॉम दिस. Okay, Del, what is your name, Del? Del, what is your name? Del. There's a fun fellow with Del. What is your name? Okay, Varun, go ahead. Good evening, friends. I'm Varun Avasti. I'm glad to be given the opportunity today to start today's discussion. The topic given to us today is sports in India. And in my opinion, this is a topic of current relevance. We all know why sports is important, as it improves our capability of teamwork, as that it regenerates our mind, and it is needed for physical fitness. But our topic today is not about that.
Our topic is about the condition of sports in India. As recently we saw how we performed in Olympics, we won many medals. It was good, but we need to improve because considering our population, and we are lacking behind many countries in medals. For example, Kenya, US, China, and Japan, and we need to improve. But so I believe that today's discussion can be about the problems, the current issues in sports in India right now, and how can we improve the condition now. So I hope we all join in today's discussion and we reach consensus. Thank you. Okay. So Sir, now myself Vinayak Singh, sir, the name of DEL. What is the name? Sir, Vinayak Singh. Vinayak, introduce. Okay, I'm glad to have this opportunity to introduce the topic. So the topic given to us is a topic which is quite interesting and an important topic to discuss upon. So what I think that the topic which is given, that is sports in India, we should focus from 1947 after the independence, what are the achievements that we have achieved, हमने जब स्टार्टिंग से जैसे अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे धीरे धीरे हम जब मूव हो रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे हमने कुछ स्पोर्ट्स में तो हमने अचीवमेंट अपनी अचीव करी है, बट कुछ स्पोर्ट्स में हम स्टिल लैग कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम दूसरे स्पोर्ट्स को हमारा फ्यूचर में हमारे स्पोर्ट्स की क्या कैपेबिलिटी है. इंडिया का जो लार्ज पॉपुलेशन है जो एंड वो एक काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है, तो वो किस तरह से हम उसको नर्चर कर सकते हैं, हमें इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए. एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट स्पोर्ट्स गिव्स टू द यंग पीपल, एंड व्हाट आर द टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द साइंटिफिक एंड technicalities of the sports which are required to nurture. And like we talk in like when we talk about the sports in India, there are we generate agenda, but the sports like athletics and swimming, and there are various other sports that also need the focus and attention. And one thing what I think that we should discuss is that why we are just focusing on the government to put the different kind of schemes. The private investment can also play a critical role in providing the opportunities. And as we know that sports and skills go hand in hand. So if we can nurture the sports talent in the India, then the skills and capabilities and the way the development of these kind of sports can take place in a effective manner. And so what I think that we should discuss that what are the basic level from the ground level what we can do so that the sports which are still lagging we can improve upon different domains in the sports. So I open the house for the discussion. Okay, Neelendra. Okay, good evening, friends. I'm glad to introduce today's topic among you, which is sports in India. I think this is a generic topic, and this is a topic which should be discussed now because it is the need of the hour. It is said that healthy mind resides in a healthy body, and sports is a preservation of health. So it is very important to inculcate a culture of sports in our country. Now I have divided this topic into three parts. The first one is the significance. Why are we discussing this topic? Why is there a need of sports in India? So the first one will deal with that. The second one is the problems that are associated with bringing the sports culture in India. What are the problems, the infrastructure or the policies that are there? And in the third part, we can discuss about the solutions. What could be the possible solutions to address all the problems that are there in India? So I think if we discuss in this direction, we can have a constructive discussion. Now I would like to open the house for discussion. Thank you. Good. So now we go to Om Chaturvedi. Yeah, good evening all. My name is Om, and I hope you all are doing well. Today we have assigned to the topic of sports in India. So we can discuss about the past, present, and the future of sports in India. So as we know that India is quite a historical country, and during this course of 5,000 years, we have invented a lot of sports like kabaddi, snake and ladders, and chess. So why we are lacking now in these sports? And if we talk about the present, then we know that India is the second most populous country in the world. Still, we are not able to win at least
medals in 2 digits. So what are the regions where we are lacking, and what are the government initiatives in the past and present, and how can we do better? We can also talk about the future of sports in India. Like we can say now in the recent Olympic of Tokyo, India India did a great job, and we won the highest number of medals in our history. So India's future in the sports can be very good topic, and we can discuss a lot. Now I open the house for discussion. I would like to hear everyone's opinion. Thank you. Adarsh? Good evening, all. My name is Adarsh Ranjan. I am glad to initiate the group discussion, and the topic given to us is sports in India. As we all know, we have the youngest population. Still, we are not that much good at sport. So we all know the importance of sports is invaluable. So it develops the team spirit, leadership skills, risk taking, analytical skills, and many more. Still, we are lagging in sports. Like cricket, we follow as a religion, but other sports we don't follow like that. So I think we should discuss on 3 points. First, why sports is needed for an individual and for a country. Second, why India is not so good at sports. Still, despite we have a youngest population, largest young population. And third, that why and what should be done to promote the sports culture and to win the international games. Now I am inviting to all of you to please participate in group discussion. Okay, Rahul? Good evening, sir. Good evening, everyone. Hi, my name is Rahul Pava, and I take the opportunity to discuss about the topic given to us, which is sports in India. I believe it is a very fascinating topic, and it is coming more in limelight after the schemes like Halo India and the win of. I believe reason why it was not much in limelight because the mindset we are growing up with as a childhood. In our childhood, we have heard a proverb saying खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, खराब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. People keep more focus on studies, as we have seen the financial conditions of the retired sports person other than in the cricket is not so much good. But now government is doing more and more efforts, like the Odisha government has done the efforts in support of the hockey team after the Sahara backed out as a sponsor, and the government has spent a lot of amount of money on Neeraj Chopra and various other sports persons. So we can discuss about the how we can make efforts by changing the mindset of the Indians, which I mentioned, and how government can play a better role in supporting the games like Odisha government did. So I believe all of us can portray terrific points on this. So I open the house for discussion. Thank you. Okay, Pawan? So good evening, everyone. My name is Pawan Nathani, and I'm glad to start today's group discussion. The topic for today's group discussion is sports in India. Surely our country has given a many legendary sports person to the world like Mary Kom, Abhinav Bindra, Sachin Tendulkar and many more. बट जब भी हम ओलंपिक्स में अपनी कंट्री का स्टैंड देखते हैं तो इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड रशिया जैसे कंट्रीज के कहीं नजदीक भी स्टैंड नहीं करता है. Despite having the population of 1.3 billion, we struggle to fetch a 3 to 4 gold medal in Olympic, and this devastating figure shows us the condition of sports culture in India. So it is not the talent or ability which India lack, it is the mentality of society. जो हमें बचपन में ही सिखाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. So today's topic put a lot of question in front of us, like what are the reasons for such a devastating sports culture in India, and what we can do as a country and as an individual to improve this. So I would like to invite everyone to discuss on this topic. Okay, now I come to Ankit. Good evening, friends. My name is Ankit Singh, and I'm glad to start today's discussion. The topic for today's discussion is sports India, which is quite very relatable to their life. And
I believe that sports are one of the major key to keep a person's body as well as mind healthy. And hence, I would like to mention some factors that discussion should be done, such as views of an Indian towards sports, like and where India stands in sports worldwide. And the third factor may be like reason for the given situation of our country, and finally, how can we improve it? Thank you. Okay, now Kali Prasan. Hello. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Kali Prasanna Banerjee. For this opportunity. Today's topic, sports in India. This is a very good topic and important topics and current affairs. This topic is very interested. In my opinion, at India, so sports in India as an Olympics or anything. So at first, इंडिया में क्या होता है, जैसा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज, जैसा पेरेंट्स स्पोर्ट्स के चीज में अगर कुछ बोलता है तो पेरेंट्स उसको इग्नोर करता है, तो पहले पेरेंट्स का साइकोलॉजी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके रिलेटेड, जो स्पोर्ट्स के बारे में। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज जो है वो स्कूल से, जैसा छोटा से बच्चा से शुरू करके स्कूल से रिलेटेड, मतलब फंडामेंटल जहाँ से शुरुआत होता है बच्चों का, वहां से उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट उसको मदद करे और उसके लिए स्कूल भी उसको सपोर्ट करे। और उसके लिए स्पेशल टीचर्स भी रखना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके स्पोर्ट्स से रिलेटेड और उसको आगे जाने के लिए इम्प्रूवमेंट कर सके, और इंडिया को यंग पॉपुलेशन को ग्रोथ भी कर सके स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सो उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है, उस प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। जैसे हर पेरेंट्स उसको मान नहीं पाता फंडामेंटली मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, कुछ का एनवायरनमेंट सही नहीं रहता, कुछ रूरल एरिया पे रहता है, कुछ अर्बन एरिया पे रहता है, कुछ को फैमिली का कंडीशंस भी बैड रहता है, तो उसको भी सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स और स्कूल्स दोनों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि उस बच्चों आगे जाके स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी कदम कर सके और उसको जो चीज का एम है वो उसका गोल तक पहुंच जा सके। उसका रिलेटेड जो सोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप्स उठाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा इसके रिलेटेड, और स्कूल्स का जो को एक सेमिनार का द्वारा समझाएगा जो बच्चों को किस तरह स्पोर्ट्स रिलेटेड मोटिवेट किया जाए और उसको किस तरह आगे कदम उठा सके, ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीज है वो स्कूल्स भी अपना पेरेंट्स को मदद करेगा, और गवर्नमेंट का तरफ से भी उसका फंडामेंटली हो, इंस्ट्रूमेंटली हो, ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ भी चीज हो, वो गवर्नमेंट भी मदद करेगा, ताकि अपना पेरेंट्स खुद को बच्चों को भी इम्प्रूव कर सके और खुद का बच्चा भी उसका मोटिवेट हो सके। I support some friends are discussed, जैसा like नीलाद्री, राहुल, पवन, बोरुन, शुभम, any other friends जो लोग इसके रिलेटेड डिस्कस किया है, I support them and they are very good topics are discussed, so I support all of them। so मैं एक बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उसके ऊपर उठाएगा और एज सुन एज पॉसिबल उसको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का कोशिश करेगा। सो इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने का कोशिश कर रहा है और एज सुन एज पॉसिबल इसका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। Okay, so I think everybody has introduced the topic. Okay, now we enter the second phase of the discussion, and this is the phase in which you have to talk to yourself and you have to listen to others, and you have to take the discussion forward and make it smooth. Don't interrupt others, don't create chaos in the discussion. The entire group will be valued on the basis of smoothness of the discussion. आपको काफी टाइम मिलेगा डिस्कशन के लिए, हाउस इज बिग, सो आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू टॉक, so you need not to be in hurry to put your points, because duration will be long, so everybody will be getting the chance to speak and give the points. So the closer you are to the topic and more relevant points you offer, on the basis of that you will be given the marks.
So now I open the house for discussion among all of you. So please go ahead. Okay, so friends, I think we should first discuss about what is the current scenario of sports in India. Is it good or is it bad? And then accordingly, we can move to the problems and then their solutions. So I would like to hear from you, what is the current scenario of sports in India? Current scenario अगर मैं of the करंट sports in सिनेरियो की India. बात करूं तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्रिकेट तो हमारा बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है, बट अदर स्पोर्ट्स जो है वो अभी लैक कर रहे हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल आई टेक दैट प्रो कबड्डी लीग, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, उसको काफी पॉपुलैरिटी मिली एंड उसके स्पॉन्सर्स भी हमें मिलने लगे थे. तो इस तरह से अगर हम कुछ करते हैं कि मतलब चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके तो वी कैन कैप्चर द people. Yes, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे सोसाइटी income is not very good. Like we take the example of the cricket, that people have a very high opportunity and high quality to gain. About cricket, like we have retirement age is very low. So the retirement age being low is basically that is lacking and changing the mindset of India. What you will do about after 38 in various other sports? Because most of the players go for ad agency. For example, like इनकम की बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो cricketers. इनकम They की would बात तो rather बाद go में for आएगी. पहले Main तो हम factor is the right income. हमारे Yes, पास your income. Like we इतनी हमारे पास दूसरे when mentioned, like the Pro Kabaddi League, the main factor people participated in that they had right. But what you will do after you will get an age of 35 and 38? That's why people don't go in sports. Because what you will do after 35, you will not be having this. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज अगर है हम लोग वो कहीं ना कहीं अपने जितना उनका इन्वेस्टमेंट रहता है उस हिसाब से वो अचीव कर लेते हैं. बट बाकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं उनमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, एंड उसमें जो उनका जो इनकी सैलरी वगैरह जो होती है बहुत छोटे छोटे कहीं पोस्ट उनको दी जाती है. तो गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे ऐसा हमें है कि उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए जिसके बाद वो सोच सके कि यस हमारे पास so much money in cricket that once you play till 30, 32 or 35 years also, you don't. They get a lot of money. What about other sports? If we keep other sports in mind, क्रिकेट हम after कभी 30 and 35 age, हमारे what पास you will काफी मैदान या कुछ अवेलेबल ही नहीं है. poor infrastructure, like infrastructure बहुत जैसे I think is there is still in the society at the ground level there is a lack of awareness of us towards sports. We do not understand the opportunity, the importance of sports and what are the opportunities that are there. level also not promoting that. We are only focused on education and we are not that much serious about sports. So I think that is one of the biggest problems. Biggest example is like इवन गवर्नमेंट ने भी फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को कभी देने की कोशिश ही नहीं किया, जिस वजह से फंडिंग की कमी है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, लैक ऑफ क्या बोलते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और करप्शन भी. I agree with you, others. But it's given chance after the age of 35 becoming coaches in various schools and becoming coaches in but now government after introducing these schemes, this tops and this Hello India, we are improving slowly, but we are improving, right? Okay, so I agree with everyone that government should do something, but let us understand that the problem of sports is a very fundamental problem in India. To start from scratch, we should address the problem at the grassroots level. I'll give you an example. The Olympic contingent that went from USA, approximately 60 to 70% of them were from schools and high schools. They were not from any national camp or national team. So I think from school level, only we should address the problem. We should develop that इंडिया में हम ज्यादातर फोकस क्या करते हैं कि हम किसी तरह हम यहाँ कभी भी एक स्पोर्ट्स को हमें अगर देखना yes, I agree with Vinay. ग्राउंड पे जाके सबसे बड़ा एग्जांपल तभी जाके हमारे यहाँ कॉलेजेस even if we have the PT period in school that is taken up by any teachers for teaching maths, so we are not serious about that. बट इवन कॉलेज एंड स्पोर्ट्स में भी दिक्कत है ना, हर स्कूल उतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो एक क्रिकेट ग्राउंड या एक फुटबॉल ग्राउंड प्रोवाइड स्पोर्ट्स वैसा हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अगर टूर्नामेंट भी ले सकता है. I agree with Shreyansh that every school cannot have that much ground, but I think it should be made compulsory to have only the condition with level. If you are having bench, you are having smart classes, then why not a playground for sports?
because Yes, I agree with you, Nilendra, because if we made compulsory, it will be better, like some classes, like till 8th class or something. स्कूल If में we made compulsory the का sports, जरूरत पड़े तो उसको से उसके ज्यादा लिए गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट भी म्युनिसिपल सपोर्ट करना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटीज का ध्यान And आना I think we चाहिए need जहाँ to पे कि stop वो comparing गार्डन ourselves with बना रहे American हैं तो schools वहाँ and colleges. जहाँ पे हम in गार्डन बना India, रहे हैं वहाँ पे स्कूल्स हम में जो छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट का ऐसी जरूरत चीजें पड़ेगा हैं उसके जहाँ लिए पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों को ताकि हर सीखने के लिए दिया बच्चों जाए। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरेस्टेड है उसको वो चीज मिल सके और वो उसको यूटिलाइज कर सके और उसके लिए अच्छा Correct. जैसे ही अगर हमें Government टैलेंट के realizes बाद में Indian पता schools लगता है don't जैसे even have the साइंस जिसमें resources and गवर्नमेंट कह रही है government कि अगर हम ध्यान conditions टॉप दीजिए for 1000 books and स्टूडेंट्स को tables. देंगे एंड हम उनको आगे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे जो कुछ अच्छे टैलेंट हैं जिनमें अंदर से ही एक कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की, वी शुड सेलेक्ट देम एंड एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड टेक्निकल जो भी जहां भी बेस्ट हमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सकती है, कोचेज हो या फिर बाहर जाके problem is the athletes do not have a constant तो source हमारा of स्पोर्ट्स income and नर्चर हो it पाएगा। cannot be viewed as a career in India. को भी यूटिलाइज So करना because पड़ेगा ताकि पेरेंट्स सोर्स ऑफ भी उसको समझ इनकम एंड सके फाइनेंशियल पेरेंट्स का भी स्टेबिलिटी साइकोलॉजी भी नहीं है। अंडरस्टैंड हो सके। जैसे कि Yes. अगर हम गवर्नमेंट का जैसे मैं गवर्नमेंट अगर जॉब करता हूँ तो मुझे मेडिक्लेम मिलता है, मुझे गाड़ियां मिलती हैं, मुझे घर रहने के लिए मिलता है। बट जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मुझे ना मेडिक्लेम मिल रहा है, ना मेरे परिवार को मेडिक्लेम मिल रहा है, मुझे भले ही दे दो, ना मेरे परिवार को मेडिक्लेम मिल रहा है, ना मुझे घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी। I support your opinion. That's the reason now. Okay, one of the solutions can be to organize leagues like we have IPL, we have Pro Kabaddi League. So if you organize that leagues, Yes. you will get a decent pay, and the And that sports in will which you get a probably decent pay, you don't need motivate medical the claim. You people. will not. Virat Kohli will not complain that I am not getting a medical claim or I am not. So What the I am main saying idea is to increase the money or the income of the sports person. Yes, I completely. If Proper we shortlisting increase the needs number to be of done. sports centers in the states and in the country and give the opportunity to the retired sports person, then this opportunity can be used for them to be means like to work hard and to go into sports in future. Yes, the retired sports person can be hired as a coaching staff also. Because they have already We played need to sports, so increase they have number the of idea. sports जैसे हम centers. स्पॉन्सर्स की Like बात करें, अगर हमने एक in एग्जांपल देखा कि उड़ीसा ने कितने एफिशिएंटली हमारे हॉकी को अगर हमारा संभाल सकता है, तो उसी तरह अगर हर स्टेट अगर कुछ कुछ अपनी इनिशिएटिव्स ले अलग अलग, जैसे हरियाणा हमारे बॉक्सिंग को अगर ले सकता है एंड यूपी हमारा एथलेटिक्स पे फोकस करे, ऐसे हम अच्छे अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग but कैंप्स if you इतने see, कम है, but if इसकी you वजह से जो see, अल्टीमेट नहीं है इसके एंड अल्टीमेटली सही हम बात है, परफॉर्म नहीं हरियाणा कर पाते। काफी टोटल आगे, टैली सिर्फ 35 हरियाणा है काफी मेडल्स आगे का। स्पोर्ट्स में And for that, the government can enter into a PPP model, public-private partnership. If the government does not have the required funds, then it can arrange with the private companies, and then it can proceed to make the infrastructure. That will surely improve the तो सिर्फ efficiency, खेल कूद not देखने training. के अलावा स्पोर्ट्स को एज अ इंडस्ट्री देखना मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी हम लोगों को जैसे एक्टिंग एज ए इंडस्ट्री लेते हैं, वैसे स्पोर्ट्स भी एज एन इंडस्ट्री मानना पड़ेगा, उसको एज ए इंडस्ट्री कंसिडर करके उसी को करियर की तरह जैसे हमें कि मेरे देखना फ्रेंड तो ने ये बोला गवर्नमेंट ही कर public सकते हैं। plus गवर्नमेंट के private, प्रायोरिटी दोनों लिस्ट का में हो पाएगा partnership होना तभी ये हो ही चाहिए। पाएगा। करेक्ट करेक्ट गवर्नमेंट के प्रायोरिटी लिस्ट में इसको आना जरूरी है। जब For तक that इसको awareness is very नहीं लेगी important. अपने लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में, तब तक मैं बेटर एक मतलब छोटा सा गवर्नमेंट एग्जांपल देना और चाहूंगा बेहतर इस नहीं कर मैटर में पाएगी। कि जैसे हमारा एक जो अभी चलाया गया तो टॉप करके कि जिसमें हमारे ओलंपिक Target Olympic हमारा जो podium. ये नीरज चोपड़ा Yes. को जो ट्रेनिंग दी Yeah, गई yeah. इसके तहत एंड उसको प्रॉपर एक टेक्निकल सपोर्ट जैसे ही गवर्नमेंट के थ्रू मिला एंड प्रॉपर एक पूरा एक उसका ड्यूरेशन में ये करवाई गई, तो अल्टीमेटली उसने रिजल्ट लाके दिया और हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत हाई है एंड सही बात अगर है, हम इस तरह से गवर्नमेंट भी प्रॉपर्ली बजट काफी ज्यादा That's बढ़ा what रही I है। was talking about. Mirabai Chanu is also पिछले won साल the medal. Like 2500 करोड़ that's गवर्नमेंट the में point बजट which I was talking I about. agree with The top Vinayak that system only. government has to do a lot of things to bring a change, and the government is already doing it. They just understand that government cannot do all the things. For example, if IPL, we talk about IPL, we talk about Pro Kabaddi leagues. Are they being run by the government? No, they are being run by the private players. So unless and until you include the private players, the thing that Shreyan said, that we cannot look at it as an industry. So for the flow of government has its own limitations and capabilities. That money government डेवलप करने can flow into the स्टेट की तरह मदर स्पोर्ट्स को भी उतनी वैल्यू दे, तभी जाके कोई इन्वेस्ट करेगा, तो फंडिंग डेवलप हो पाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट कुछ तो करना चाहिए उसको, जैसे अभी हमारी अदिति अशोक ने जब पार्टिसिपेट किया था, उनने बाद में ये चीज बोला कि उनको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए, उनको खुद से सारी चीजें कैंप तक जाना, उनके कैंप्स इतने दूर होते थे। ये सब कहीं ना कहीं ऐसा है कि हाँ, माना कि प्राइवेट जो है अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत
बहुत कुछ हो सकता है, बट इनिशियली गवर्नमेंट को ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि उसको बट क्यों अच्छे से परफॉर्म But we can do it on national level also. Like IPL is there, we can also make sports like for similar sports in hockey also, for women team also, such like we have IPL, we can make for hockey also. Yes, we should introduce like we can introduce a league for that. Yes. Once we introduce a league, sponsors will come and then money will come. हाँ, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में ऐसा रहता है कि लोगों का इंटरेस्ट तभी आता है जब उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स देखने में शायद इंटरेस्ट कम बनता है, जैसे प्रो कबड्डी लीग में हमारे कबड्डी के साथ हमने जब उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्रिएट किया तो हमारे व्यूअर्स बढ़े एंड उसमें स्पॉन्सर्स आने लगे। उनको पोटेंशियल दिखा, जैसे अभी हमने देखा आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बार्कलेस प्रीमियर लीग से ज्यादा महंगी बिकी, तो उनको बाकी स्पोर्ट्स पे भी इक्वल वेटेज देना चाहिए। There is one more thing that people in India do not come into limelight if they are in any other sport except cricket. Like if we take an example of a sport named Formula 1, none of us know, most of us don't know about Jehan Daruwala, who can be a racer in Formula 1 in near future. None of us know because we don't bring people in limelight other than the people that are in cricket. Because role models are very less. They are role models. Not in cricket like Baichung Bhutia and Sunil Chhetri, they are footballers, but they are already in limelight. Yes, so one who plays good like. But they are just two football players. Only people know only cricket players. Everyone remembers the complete Indian cricket team, but no one remembers the complete Indian football team. We just know Baichung Bhutia and Exactly. Just two. Yes. If I ask There is you a reason to behind Whenever a new cricket player come, we all know शायद यही रीजन है कि हम बचपन से जब भी बड़े होते हैं हम देखते हैं कि हमारे रोल मॉडल जो है क्रिकेटर्स हमारे रोल मॉडल बनते हैं, हम उसी पे फोकस करना शुरू करते हैं। काफी सारा जो हमारा यूथ है वो क्रिकेट की तरफ ही जा रहे हैं। कपड़े धोने वाली थपकी से क्रिकेट खेल लेते थे हम लोग। ये सब इसलिए है क्योंकि हम कपड़े धोने वाली थपकी तक से क्रिकेट खेल लिया करते थे बचपन में। That's why cricket is exactly. क्रिकेट गली में भी खेला जाता है तो आसपास वाले खुद ही मना कर देते हैं। अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, गली में खेल लेंगे, लेकिन अगर जब हमें फुटबॉल या टेनिस खेलना है, यार टेनिस है, बैडमिंटन है, ऐसी चीज अगर मुझे खेलनी है तो मुझे एक परफेक्ट ग्राउंड चाहिए, जिसके लिए मैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डायरेक्ट टच में रहती है वो हमारे साथ रहे, जैसे कि जनों के लिए सपोर्ट योर पॉइंट। हाँ, जैसे कि बुरे लोगों के लिए पार्किंग के लिए जैसे अगर हम बात ऐसे कि वैसे ही अगर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों के लिए खेलने के लिए बनाए गए, बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए वहाँ पे स्पोर्ट्स उद्यान खुला है मेरे घर के पास में। Some of the point which I want to make to improve the sports in India. तो ऐसी चीजें रखना मेन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स को बच्चों तक पहुंचाना मेन इंपॉर्टेंट है, तभी फ्लरिश होंगे। क्रिकेट हमारे तक इजीली अवेलेबल है, इसीलिए ग्लैमराइज्ड भी है, इसीलिए पॉपुलराइज्ड भी है और इसीलिए हम उनको आइडियल मानते भी हैं। अगर बॉटम में वो पहुंचता नहीं है तो हमारा अप्रोच बॉटम टू टॉप होना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो रहते हैं वो मेंटेन नहीं रहते हैं। अगर हम स्कूल से ही रिकॉर्ड्स लें फिर उसको मॉनिटर करें, ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जैसे ही ऐसा है कि हम मेडल्स पे फोकस ना करें, पहले हम अगर हम स्कूल से स्पोर्ट्स पे मार्क्स रख देना तो वो भी एक अच्छा आइडिया होगा। स्पोर्ट्स में ही मार्क्स रख दे, कंपलसरी कर दे स्पोर्ट्स को ना एक after school for a separate PT period or a training period after the schools, so that can be one of the solution. And okay, now somebody can conclude. Please conclude. Yes, sir. So in the end, I would like to conclude by saying that the government is making many efforts and the mindset of the people is changing. Got some points to conclude. Like some of my friends said that the kind of technicalities that are required, that things we are lacking. So we should focus that how these technicalities can be brought up in our country. So we have to focus on how we can do the different kind of how we can bring the private
different private organization to this. Different leagues can be organized, and from the school levels we can think about that how we can bring the talent and nurture the talent, and what are the things that government can do, and what are the things that we have to do as our own. Like some of my friends also said that the people don't see other sports as a career option. They only think that cricket is an option which we can focus upon. Like there is problem of when the players get retired, there is problem that what they are going to do in the future. So we have to take the things in such a manner that there should be certain security of jobs, and also the thing is that not only him, the players, उनकी फैमिली, उसको भी हमें देखना है वहां पे कहीं ना कहीं कि उसके फैमिली पे भी वो उसको बियर कर सकता है उसकी कॉस्ट को, एंड साथ के साथ जो भी हमें ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट एंड ये सब चीजें जो हमें प्रोवाइड करनी है प्लेयर्स में, ये हमें देखना है। एंड कहीं ना कहीं जो एक बचपन से हम जब ऐसे ग्रो होते हैं तो हम जैसे ही देखते हैं कि करियर ऑप्शन में सिर्फ क्रिकेट है, हमें कहीं ना कहीं इस जो ये थॉट है इसको कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारा काफी टाइम हो चुका है 1947 से, एंड हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चीजों को धीरे धीरे मॉडिफाई करना जरूरी है, एंड कुछ स्टेप्स हम लेंगे, एंड फिर हम फाइनली इसको ऐसा है कि अदर स्पोर्ट्स जो है लाइक एथलेटिक्स, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर वो पार्टिसिपेट लेते हैं एंड एक इनिशिएटिव लेते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, and we can perform well in any sports, whichever if we try to focus on different sports, we can bring the medals in the Olympics, or we can perform well at any stage at any point in different sports. I want to add one thing, that financial stability after retirement, also financial stability during playing also. Other than cricket, we should focus on the salaries, and we should focus on the financial stability of sportsmen that are involved in the sports that are other than cricket, which are not that much glamorized till now. So this is the point that I wanted to add. Any other point anyone want to add? Okay, so let me now give you the feedback. See, conclusion mein, Shreyans, you are not to again conclude. If somebody has concluded, you are not to again conclude, because that will not provide you any marks, and in fact your marks may go down also, unless until somebody has not concluded very well. So you will not again conclude the discussion. Now let me give feedback to each one of you. I start with Shubham. Shubham, I give you 6 marks in introduction. आज आपने बोला है, लेकिन शुभम आपने structure create नहीं किया discussion के लिए. Introduction में you did not create a structure. You said that what are the presently reasonable basically what are the basically points which are not producing the players, what are the reasons why we are not producing the players, what measures should be taken. You talked about Khelo India, you talked about school making it curriculum. वो बातें आपने किया, लेकिन structure की form में आपने नहीं दिया introduction. Introduction में there is always a structure. Introduction में there is always some discussion about the topic, and then what you want to discuss. So you have not categorized how you want that discussion, in what direction you want the discussion, how you want to categorize this entire discussion. Shubham, you did not say that. Today you spoke in body also a couple of times. I could see that. So that was also from your side, but still largely you were not talking. But try to speak more and more. Actual situation में इतना हेक्टिक नहीं होता, इतना ज्यादा लोग नहीं बोलते एक्चुअल में जब तुम जाओगे, लेकिन स्टिल यू शुड प्रैक्टिस टू टॉक. तो वो प्रैक्टिस करो, जो इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करो, एंड बीच में बार बार इन्वॉल्व करने की ट्राई करो. If I come to Shreyans, then Shreyans has given introduction wala part was good. He could speak some of the points, like discussion in points pe hona chahiye, content was there. He first started with the difference of the games. He said, we have cricket, football, why not athletes? So he focused more on athletics. So friends, I think we should talk about those games which are so far neglected, like athletics, and which are more in, Olympics kind of game events. He said we have neglected the sports. Those sports we should talk. We should bring those up. He said medals में हम बहुत पीछे हैं. Medals के ऊपर हमें ऊपर आना चाहिए. He said how to improve sports, हमें उसके बारे में discussion करना चाहिए. So I give 7 marks to Shreyans in introduction. So Shreyans spoke on some issues which are important and we should discuss.
बट श्रेयांश योर जो स्ट्रक्चर है ऑफ इंट्रोडक्शन, दैट इज देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? एंड वो तुम्हें 2-4 लाइंस ऐड करनी चाहिए थी. बॉडी में भी यू हैव स्पोकन, दैट इज आल्सो गुड, यू हैव गिवन योर कंट्रीब्यूशन, बट ग्रुप टास्क में केयरफुल रहना बिकॉज यू टेंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप. ग्रुप टास्क में दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू, सो ट्राई टू सी योरसेल्फ इन ग्रुप टास्क आल्सो. If I come to Varun, then Varun, I'll give you 6.5. So Varun said why sports are important. We should discuss about that first. And he said, okay, recent Olympics का हम performance अगर देखें, उसमें भी हम लोग वहां पे stand नहीं करते हैं. We need to improve. क्या issues हैं और इसको कैसे improve कर सकते हैं, इसके ऊपर discussion करेंगे. That is what Varun said. So I give 6.5 to you, Varun. You have given the structure. You have discussed about the topic also. Yes, content enrichment has to be there. आप और थोड़ा enrich करो अपने आप को content में. बॉडी में भी आपने बीच में बात किया है, थोड़ा और इंक्रीज करो उसको. देन कम्स विनायक, एंड विनायक आई गिव यू इन द इंट्रोडक्शन 7, बॉडी में भी ऑलमोस्ट 7 और कंक्लूजन में आल्सो आई गिव यू 7. द गुड थिंग एंड बैड थिंग अबाउट यू इज दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश कैसा होना चाहिए वो आपने बेस्ट डिस्प्ले किया है. इफ समबडी वांट्स टू लर्न के हिंदी और इंग्लिश दोनों को कैसे कंबाइन करना है, तो उसको विनायक ने एक डिस्प्ले किया है इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर कि कैसे उसको दोनों को मिक्स करके बोला जा सकता है. फ्लुएंसी अच्छी है और एनर्जी लेवल भी अच्छा है तुम्हारा, लेकिन नेगेटिव ये है कि तुम बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत ज्यादा तुमने बोला इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी, और उतना टाइम वहां पे तुम्हें नहीं देगा. और तुम उतना प्रैक्टिस करो कि विद इन पर्टिकुलर टाइम आप अपना इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सको, सो दैट इवन इफ समबडी कट्स यू शॉर्ट you have spoken your points. That is how you have to practice. You started with 1947, how other sports, what the future of other sports is, potential क्या है इंडिया का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड स्किल्स, बॉटम अप अप्रोच की बात की आपने. जो सुनने वाला है उसको कोई एक पॉइंट अच्छा लग जाए तो मार्क्स मिल जाते हैं. जैसे मेरे को तुम्हारा बॉटम अप वाला अच्छा लगा कि स्कूल से कॉलेजेस की तरफ क्यों नहीं चलते हैं. बीच में शायद नीलेंद्र ने या किसी और ने बताया भी था कि जो कॉन्टिंजेंट था अमेरिका का उसमें लार्जली स्कूल के बच्चे थे और समथिंग लाइक दैट. सो ठीक है, मतलब स्कूल की तरफ से ज्यादा होना चाहिए. व्हाई वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉलेज, व्हाई वी थिंक ऑफ इट इन कॉलेज, व्हाई नॉट स्कूल्स. जिस कंट्री में जेई और नीट की कोचिंग अगर 5वीं 6वीं की क्लास से होती है तो यार स्पोर्ट्स क्यों नहीं हो सकता है? व्हाट इज द ट्रबल एक्चुअली? जब वो एक्चुअल एज खेलने की है तुम उसको जेई की कोचिंग दिलवा रहे हो यार, कोडिंग सिखा रहे हो. वो बिल्कुल सही तुम लोगों ने फ्रेज 2-3 बच्चों ने तुमने बोला, वो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. वो बिल्कुल सही बात है, वो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि खेलना कूदना नहीं है भाई साहब, कोडिंग करो शुरू से. सो दैट इज हाउ वी आर ट्रेंड. और कंक्लूजन में भी तुमने विनायक अपना पॉइंट लार्जली रखे, तुमने कंक्लूजन जो है वो ग्रुप की तरफ से कम किया है, तो कंक्लूजन को भी वैसे करना है. नीलेंद्र का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो, तो तुम नीलेंद्र का जो है इंट्रोडक्शन सुनना. दैट आई एम गिविंग, नॉर्मली आई डोंट गिव 8, बट इन हिज इंट्रोडक्शन आई विल गिव 8 टुडे. दैट हैज गॉन वेरी गुड एक्चुअली. इसका इंट्रोडक्शन पहले इसने बोला कि इट्स अ जनरल टॉपिक, व्हिच इट इज. देन ही सेड इट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट आल्सो इज ट्रू. देन ही सेड ओके, हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी, वो भी एक फ्रेज भी डाल दी इसने बीच में. फिर उसने 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया, और वो 3 पार्ट थे. इसका सिग्निफिकेंस क्या, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, नीड क्या है, पहला पार्ट. दूसरा, प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, पॉलिसीज में कहाँ ट्रबल है. तो इसने होलिस्टिकली सारी प्रॉब्लम्स भी इंट्रोडक्शन में बोल दी, और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन कैसे बेस्ट बोला जा सकता है वो नीलेंद्र ने बोला, और उतने टाइम में बोला. तो जैसे आप अपलोड होगा आप अपना एनालिसिस करोगे, नीलेंद्र का भी सुनना, हर एक दूसरे से आप सीखो, हर एक आदमी एक दूसरे से सीखे कि किसी ने कौन सा पार्ट अच्छा बोला. तो नीलेंद्र ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया कि जैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, टॉपिक के बारे में बताया, फिर बीच में कोई फ्रेज है तो मार दी, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर जल्दी से ओपन कर दिया कि भाई साहब डिस्कस करते हैं. तो नीलेंद्र का वो पार्ट अच्छा था. बीच में नीलेंद्र ने बोला कि करंट सिनेरियो जो है वो इंडिया में स्पोर्ट्स का कैसा है, फोकस हमें एजुकेशन पे ज्यादा करते हैं और हम स्पोर्ट्स पे कम करते हैं. तो नीलेंद्र बीच में वो बातें बोलता रहा. ठीक है, नीलेंद्र का लेवल अच्छा है इसमें जीडी में, तो दैट वेंट वेल विद हिम. देन ओम इज नॉट हियर, आई थिंक इसका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था. सो ओम को आई गिव 6 बिकॉज उसने लैक ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा वो क्लासिफाई नहीं कर पाया, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कैसे डिस्कशन करना है आगे, वो चीज नहीं हुआ. आदर्श के केस में यस, आदर्श के पास कंटेंट अच्छा था. आदर्श का फ्लुएंसी चाहे उतना अच्छा नहीं, लेकिन उसका कंटेंट अच्छा था. आदर्श को 7.5 दूंगा मैं इंट्रोडक्शन में. उसने बोला हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन है, फिर भी भाई साहब हम कहीं पे नहीं है, पॉपुलेशन हमारी उस एज ग्रुप में है. बहुत सी चीजें स्पोर्ट्स से मिलती हैं, टीम स्पिरिट मिलती है और भी स्किल्स मिलती हैं स्पोर्ट्स से.
और इसने बोला कि क्रिकेट ही होता है, बाकी क्यों नहीं होते हैं, तो क्या नीड है, उसने भी फिर क्लासीफाई किया। तो आदर्श ने भी क्लासिफिकेशन अच्छा दिया कि क्या रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, क्यों इंडिया जो है वो अच्छा नहीं है डिस्पाइट ऑफ कि हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी यंग है, यूथ है हमारे पास, और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो कंटेंट आदर्श का बहुत अच्छा था, मतलब आदर्श का जो स्पीकिंग था वो नीलेंद्र और मैं बोलूंगा कि जो बाकी आप में से लोग, जैसे विनायक ने बोल दिया, श्रेयांश ने बोल दिया, वैसा तो फ्लुएंसी में नहीं बोला आदर्श ने, उसका नहीं है, लेकिन ये फ्लुएंसी से रिलेटेड भी नहीं है। जीडी जो है अपना काम की बात रखोगे तो पास हो, तो काम की बात से नंबर कैसे मिलते हैं ये आदर्श से हम सीख सकते हैं कि अगर मेरे को वैसा बड़ा फ्लुएंसी में बोलना नहीं आता है, अगर फिर भी नंबर कैसे लेने, तो काम की बात बोलो, सीधी बात, काम की बात, नंबर मिलता है। वो आदर्श ने अच्छा उस तरीके से बोला। बीच में बोलता रहा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड की प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन नहीं देते हैं हम, वो सारी बातें बोली। राहुल ने स्टार्ट किया खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो अच्छा फ्रेज है, मतलब ऐसा बोला करो। यही जो मैंने आपको भेजा था एक प्रोवर्ब्स वगैरह, अब आप उसको ढूंढता रहा करो कि अब स्पोर्ट्स का हुआ है, तो जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा तुम कॉपी पे जाके पॉइंट्स लिखोगे कि हाँ भाई अगर स्पोर्ट्स आ जाए तो ये पॉइंट अब हमने डिस्कस किए और ये पॉइंट्स हमने लिखने हैं। और साथ में जाओगे कि खेलों से रिलेटेड दो तो फ्रेज आप ही लोगों ने दे दिए, एक फ्रेज ये दे दी हिंदी वाली, एक हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी दे दिया, और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जाओगे ना, कोर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो 5-4 कोर्स आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे यार। किसने बोला उसकी जरूरत नहीं है, आपने कोट मार देना वहां पे तो आपका इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा बात बोलना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। सो राहुल सेड हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग, एंड उड़ीसा गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, नीरज चोपड़ा का एग्जांपल दिया। हम बाकी प्लेयर्स के बारे में हम नहीं जानते हैं, कुछ प्लेयर्स के नाम हमें पता होते हैं, ये सारी बातें बोली। तो राहुल को 7 के आसपास में रखूंगा इंट्रोडक्शन में, एंड दैट इज हाउ ही हैज स्पोकन। उसका पवन को आई गिव 7 मार्क्स। ही सेड वी हैव लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ के नाम भी उसने लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 3-4 मेडल मिलते हैं ओलंपिक्स में, विच इज वेरी लेस, एंड हमारा कंट्री इतना बड़ा पॉपुलेशन है और हमें मेडल कम मिलते हैं, तो दैट हैज टू बी, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाई नॉट मोर मेडल, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये पवन ने भी यही पॉइंट पे बात किया। अंकित को आई गिव 6 मार्क्स। अंकित आपको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छा नहीं किया और थोड़ा सा एक्सटेंड करो। आज आपने बोला इंट्रोडक्शन में, लेकिन कंटेंट एनरिचमेंट कम थी, कंटेंट कम था, स्ट्रक्चर कम था, बॉडी कम था, वो थोड़ा सा आप उस तरीके से उसको ऐड करो। एंड काली पर्सन को भी आई विल गिव 6 मार्क्स। काली पर्सन सेड फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं चिल्ड्रन के लिए, वो जो हमें कुछ फीचर्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। ही टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स के, मनी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इशू है, फैमिली कंडीशंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट के स्टेप्स, गवर्नमेंट इज टू हेल्प। सो काली प्रसन्न वाज मोर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ sports in India. Sports in India, why it is relevant, what is the status as of now, where we are to take it, those points are also to be spoken. So that is all about this topic. Now see, this topic was very broad topic, and this topic can be discussed in many features. Sports in India is a very generic topic. We can always say what is the relevance of sports in India. India is a country of youth, and hence sports is a natural choice for many of the youngsters, like any developed countries. Career options through academics and career opportunities through sports should be equally there, but that is not the trend in India. Mindset of the parents is to get changed, and that is a need of India. Also in global countries, we are doing very good in science, we are doing very good in technology, but we are not doing very good in sports. आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में देखते हो तो 5-6 नंबर में आते हैं, क्यों? फोकस हमारा इंजीनियरिंग साइंस की तरफ है, पेरेंट्स का भी, बच्चों की तरफ भी, तो हम आगे हैं साइंस में, हम टॉप पे हैं। अगर पेरेंट्स का रुझान इस तरफ आ जाएगा तो हम स्पोर्ट्स में भी आ जाएंगे। अब कुछ स्टेट्स ने वैसा करना स्टार्ट किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, आप सोल्यूशन कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन दो ना यार, कि जो भी आदमी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जाता है, कॉन्टिजेंट का पार्ट है, उसको भाई साहब गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दी जा सकती, ये बताओ। कितने लोग चले जाते हैं? 400 लोग चले जाते हैं। 4 साल के बाद 400 लोग अगर ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो 400 लोग वो बेस्ट हैं अपने। Why only नीरज चोपड़ा should be given job and money? Why not that fellow who missed his medal? But he is equally good. आप जानते हैं ना, चौथे नंबर पे आ गए आप, तो आप कम थोड़े हो किसी से। माइक्रो सेकंड्स में तुम थर्ड नहीं आए, बट आई शुड गिव यू समथिंग ना, आपकी जो सिक्योर होना चाहिए फ्यूचर। अगर आप स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स तक गए और फिर आपको ये चिंता है कि मैं नौकरी कहाँ करूंगा यार, ओलंपिक्स में तो मैं चला गया पर अब जॉब कहाँ करूंगा, देन कल्चर कैन नॉट प्रमोट। सो यू शुड बी गिवन, द गवर्नमेंट इज टू टेक केयर ऑफ दैट। एक्चुअली बहुत से रिच लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उनको भी पैटर्नाइज करना चाहिए, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया। व्हाई नॉट अंबानीज, व्हाई नॉट अदानीज? दिस कंट्री हैज गिवन देम एवरीथिंग, सो व्हाई दे आर नॉट एंटरिंग इनटू दिस?
why not Birlas, why not Tatas, why not Godrej, why not governments are coming to promote this culture, that also is required. ये चीज है. एंड स्कूल्स में शुरू से ही ये रुझान होना चाहिए और पेरेंट्स का भी ये रुझान होना चाहिए. और इसको लिंक भी कर दो कि आजकल क्या हो गया, हमारी जनरेशन में पेरेंट्स बोलते थे यार तुम ये घर में आ जाओ और खेलना बंद करो. अब पेरेंट्स बोलते हैं तुम मोबाइल देखना बंद करो, खेलने जाओ. तो मोबाइल से बच्चों को छुड़ाने के लिए भी ये खेलना जो है बहुत अच्छी चीज है. अगर आप गेम्स का प्रमोट करोगे स्कूल में तो बच्चे की हेल्थ भी बनेगी, माइंड भी बनेगा, हेल्थ भी बनेगा, सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उस तरीके से. इस डायरेक्शन में हम डिस्कशन को ले जा सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ दिनों के बाद 3-4 दिनों के बाद दोबारा ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, सेम टॉपिक, एंड यू गाइज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, ओनली यू गाइज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है. डू वन थिंग, टेक आउट योर कॉपीज and now write all the relevant points which we have taken, and for the next discussion we will take the discussion to the next really good level where everybody is speaking very nice and we are giving good points. YouTube पे देखो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे पॉइंट्स ढूंढो और अच्छा डिस्कशन हम इसका करें. तो रेपिटेशन मारेंगे इस टॉपिक का दोबारा, सो दैट अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कभी भी आ जाए, चाहे वो किसी भी मेडल से आ जाए, ओलंपिक्स मेडल किसी से भी आ जाए, तो वी आर इन पोजिशन टू पार्टिसिपेट. राइट? सो ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ.